So what we were doing this rectangular prism ka development. Now we'll do the next part. Since we have done only three, like he has done only started working. We'll also do the three sums. मतलब और भी है, मैं आपको वो भी वीडियो दे दूंगा, लेकिन अभी एग्जाम के लिए सिर्फ ये तीन पे ही फोकस करो आप लोग. इसमें क्या लिखा है? ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ एन इक्विलैटरल prism of base side 30 mm and 40 mm height, resting on its base on VP with one of its rectangular face parallel to VP. See आ गया ना, parallel to VP मतलब parallel to XY. And closer to it मतलब nearer to VP. बराबर? ये आ गया, समझ में आ गया फर्स्ट वाला पार्ट. इसमें कोई डाउट है किसी को सॉलिड्स के? No, sir. Now here they have mentioned give all dimensions. So draw development करना है हमें, तो आगे करते हैं. So on to VP. See, this is how and nearer to VP. So when you will draw in top view, you will draw it like this. This is how you will draw triangular prism. This will be dark because you can see this. You can write A, B, C. This is A dash, B dash, C dash. Height is given 40. And this base is 30. Now for development, what you will do? You will draw a horizontal line and vertical line from here. Now you take A to B. How much is A to B? 30. So this is capital A. You cut B over here. Then take B to C, again 30. You cut over here. Again take C to. ये समझ में आ रहा है? ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, कहीं पे भी एक वर्टिकल लाइन बना दो. A to B कितना है? 30, तो वो कट कर दो. B to C कितना है? 30, वो कट कर दो. C to A कितना है? 30, वो कट कर दो. तो 3 रेक्टेंगल बन गए और 2 ट्राइंगल बनाना है. खत्म. देख लो. To A 30, you cut over here. So this is how you will get 1, 2, 3 rectangular surface. Now if I want to draw total surface development, then I need to draw triangle. See, ये मैंने जो किया वो लैटरल मतलब 3 रेक्टेंगल का एरिया. तो 3 रेक्टेंगल का एरिया यही होगा ना, साइड 30 और हाइट 40. मैथमेटिकली देखेंगे तो ये 3 रेक्टेंगल हो गया ना, 3 एरिया हो गया ना इसका, और ऊपर नीचे का ट्राइंगल बनाना है बस. Angle. So I will draw it triangle over here. I can draw it anywhere, but this is where I'm drawing. So this is done. Now we'll do the next one, which is square prism. बस, तो आपको सिर्फ इतना ही है. ठीक है, तो मैं यहाँ तक ही करता हूँ. आगे का वीडियो देखना है तो मैंने शेयर किया ये वीडियो आप लोग के साथ, तो आप लोग देख सकते हो, नहीं तो फिर रहने दो. ठीक है. नाउ विल डू सेक्शन वाला पार्ट. जो मैंने वीडियो किया है वो मैं शेयर करता हूँ. All of you understood up till now? Any doubt in this triangular prism? No, sir, no doubt. Okay, thank you, Beta. Now I'm sharing the video. Whatever all of you can see. Let's start. So now we are doing a section of solids. What do you mean by section of solids? If you cut solids, how it will look? Let's take, you have a square prism like this, right? And if I'll tell you that if it is cut horizontally, how it will look? It will look like this. So this is what we need to draw, right? So this is one of the type. Let's say I can cut square prism like this also, with like this also. When I cut into 2 parts, this is how it will look, right? So this is what we need to draw the next topic. We have 5 sums, so I'll go through it.
So first one is project the sectional front view and top view of a vertical. हाँ, you have only 3 sums because he has done 3 sums and एक फिर चौथा सम कुछ किया है तो वो करेंगे. तो सेक्शन ऑफ सॉलिड्स का मतलब क्या होता है? व्हेन यू कट हाउ इट लुक्स. अगर ये स्क्वायर प्रिज्म है उसको मैंने हॉरिजॉन्टली काटा तो वो कैसा दिखता है? अगर मैंने इसको वर्टिकली काटा तो वो कैसा दिखता है? सो दैट वी नीड टू ड्रॉ. सो फर्स्ट विल सी द पहले वाला सम. Vertical triangular prism of side 50 and height 60 resting on HP on its base, right? And with a vertical rectangular face nearer and parallel to VP. So all of you know how to draw that triangular prism like this. So this is the main part. First we will draw how to draw triangular prism. ये देखो, ये उन्होंने ट्रायंगुलर प्रिज्म बोला है कि ड्रॉ वन ट्रायंगुलर प्रिज्म विद वन ऑफ इट्स साइड्स इज पैरेलल टू वीपी एंड नियरर टू वीपी. सो दिस वी नो हाउ टू ड्रॉ. देन उसके बाद क्या बोला है देखो. One of the this edge, right? Vertical rectangular face is nearer and parallel to VP. तो वो तो That is समझ parallel to XY line. Right? When it is sectioned by a vertical plane, it is cut by a vertical plane. Now, अभी इसमें क्या है ना, ये मैंने बुक में देखा, उसने बोला इट इज कट बाय वर्टिकल प्लेन बट देयर इज नो डिस्टेंस गिवन. कितने डिस्टेंस पे काटना है, क्या है, कुछ नहीं बोला है. वो बोलना चाहिए. सो मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ कि इसमें बीच में कहीं से भी ऐसा ले रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ से इसको काट दिया. सपोज मेरे पास अभी एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है. लेट्स से इफ आई हैव अ ट्रायंगुलर प्रिज्म लाइक दिस, बराबर. अगर ऐसा ट्रायंगुलर प्रिज्म है और उसको मैं यहाँ से ऐसा काट रहा हूँ, so it will appear like this. Any doubt in this? आपके पास अगर सपोज टॉबलरॉन रहेगी और उसके ऊपर ऐसा फ्लैट काट दोगे तो ऐसा ही बचेगा ना. Am I right? Yes, sir. हाँ. So this is what we need to draw. तो हमको क्या करना है, ये पॉइंट से और ये पॉइंट से ऊपर प्रोजेक्ट करना है, ऐसा सीधा लाइन बनाना है और ये बीच में उसको हैच करना है. ये हो गया हमारा सेक्शन ऑफ सॉलिड्स. खत्म. और कुछ नहीं करना है. तो एक बार जब आपको सॉलिड समझ में आ जाएगा तो ये ड्रॉ करना इजी हो जाएगा. एंड डोंट वरी, ये 12th में ये सब नहीं है, ये सब टाइम पास है, ये सब करना भी नहीं होता, लेकिन आपके सर कर रहे हैं. बट दिस इज व्हाट इट विल कम. मैं दिखाता हूँ. they are now they are saying that it is cut by vertical plane, but what my issue over here is the distance is not given at what distance it is cut. So I will take this 50, this height is 60. Now this distance is not given, so it is cut by vertical plane. So I'm assuming from the center. So maybe I take a half of this height and I'll cut like this. So if you have a triangular prism, let's take you have a triangular prism like this, and it is cut by a vertical plane. That means there is one imaginary plane which is cutting this prism. So how it will look? So it will look like this, right? So the same thing, what we will do, we'll project this point and this point straight up. This line is gone, and we'll draw 45-degree hatching lines over here. So incline at 45 degree. So this is हाँ. So these lines are inclined at 45 degree. वो याद रखना आप लोग. ठीक है, ये 45 डिग्री पे बनाते हैं. sectional front view and this is top view. This is the section of solids. I will see. ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट है किसी को? सर मेरे को एक क्वेश्चन था. हाँ. आप लाइक ये जो ट्रायंगल कैसे आप अपने को समझा सकते हैं? लाइक जो नीचे ट्रायंगल होता है वो लाइक हाँ. सो ये ट्रायंगल का उन्होंने दिया हुआ है इस क्वेश्चन में that one of its side is parallel to VP and nearer to VP. It's an equilateral triangle resting on its base on HP. तो ये हमें मालूम है ना. When I say it is one of its sides is parallel to VP and nearer to VP, उसका मतलब क्या हुआ? ये जो साइड है, ये ट्राइंगल का साइड है, बराबर. ये आपका HP VP हो गया ना, राइट. तो उसमें वो बोल रहे हैं कि ऐसा ट्राइंगल ऐसा है.
one of the side is parallel to VP. Got it? And इसको और कट सर करेंगे. मेरे को एक और question, हाँ बोलो. मैं ये जो हम लोग का जो ऊपर जो एक्सपायर लाइन के ऊपर जो वो हम लोग सेक्शन बनाते हैं बोलर हम्म, जो है वो जो डॉटेड सॉरी जो लाइंस का डिस्टेंस जो लाइक प्रॉपर लाइन से लाइक इन दोनों लाइक के बीच में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस की बात कर रहे हो. ये डिस्टेंस. वो नहीं वो और जो दूसरे लाइन है ना बाजू में दो ये खाली ये लाइन कहाँ से आई? यहाँ से आई. यहाँ से प्रोजेक्ट किया हम लोग ने. ये जो कट किया ना हम लोग ने, कटिंग प्लेन बनाया. वो अच्छा हाँ ओके ये ओके कूल ये जो ठीक है मैं समझ डॉट गया मैंने 2 डॉट बनाए ना, वो डॉट से मैं ऊपर गया. ओके फाइन ठीक है. और वो मिडिल से पास होती है ना लाइन वो ये लाइन का डिस्टेंस दिया नहीं है, तो मैं ऐसा रैंडमली यहाँ से 20 या ऐसा कुछ लेके मैं कर सकता हूँ. लेट्स टेक 20. ठीक है ठीक है. आपको ऐसा कुछ दिया नहीं है, आपको सिर्फ बोला है कि एक वर्टिकल प्लेन है जो ऐसे काट रहा है. तो देखो इतना पोर्शन कट हो गया. आ रहा है समझ में? ठीक है ओके आगे देखते हैं. The next one, this distance is not given. We'll take this distance as x, whatever you want. मैंने 20 20, लिया. 25, 20 would be better. So first sum is done. Now we'll see the next sum. You don't have such sums in CBSE 12th standard, so don't worry about this. Okay. A square prism of 45 mm long, edges and 60 mm length is resting on one of its rectangular face on HP with its square ends parallel to VP, so parallel to XY line. So we know how to draw this, and it is cut by a plane. Okay, a square prism of 45 mm long, edges and 60 mm length is resting on one of its rectangular face on HP. Okay, it's a different thing. Its axis perpendicular to VP. See, this is अभी ये HP अलग VP, सम all है, of ये you अब know, तक right? आप लोगों ने किया नहीं है. So what they are saying that ये अलग a हो. square prism is resting on its rectangular face. This is the rectangular face on which it is resting on horizontal plane. See, up till now क्या होता था? Up till now a square prism is resting on its base. Up till now हम लोग जो भी करते थे ना, तो उसमें क्या करता था कि a square prism is resting on its base. तो ऐसा आता था. अभी वो क्या बोल रहे हैं कि it is resting on its rectangular surface, मतलब वो इस पे रेस्ट कर रहा है. तो आप ऐसे बनाएंगे, उसको लेटा हुआ बनाएंगे, तो क्या होगा? when you see from the front, what you will see? Square. When you see from the top, what you will see? Rectangle. So this is what the initial doubt. Remember, आप लोग को डाउट था ना कि स्क्वायर नीचे बनाना है कि ऊपर बनाना है, आप नीचे क्यों बना रहे हो? तो ये सम में ऐसे क्यों आएगा? बिकॉज इट इज रेस्टिंग ऑन इट्स रेक्टेंगुलर फेस. सी, स्क्वायर प्रिज्म में 2 स्क्वायर होता है और 4 रेक्टेंगल होता है ना, तो उसने बोला है कि इट इज रेस्टिंग ऑन इज रेक्टेंगुलर फेस. सो इसलिए ये ऐसा आता है. इसमें और एक चीज भी बोल सकते हैं कि एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वीपी. एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वीपी, वो भी होता है. सो दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अंडरस्टूड? ये समझ में आया आप लोग को? Could you just repeat it again, please? I said this sum mein, they have said it is resting on one of its rectangular face. Up till now, whatever sums we did na, in that we were saying that it was resting on its base. It was resting on its base. But in this sum, they have said it is resting on one of its rectangular face. So it will come like this, where in front view you will see square and top view mein you will see rectangle. Understood? Got it, sir. Yes, sir. ठीक है. तो ये अलग टाइप का सम है. तो यही डाउट था आप लोग को शायद, क्योंकि सर ने ये एक्सप्लेन किया होगा, तो आपके मन में डाउट आया होगा कि अरे सर ने स्क्वायर ऊपर क्यों बनाया, अब तक हमेशा नीचे बनाते थे, अचानक ऊपर कैसे चला गया? तो ये ऊपर कब जाएगा? व्हेन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड व्हेन इट इज रेस्टिंग ऑन इट्स रेक्टेंगुलर फेस. तो 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 12th के लिए हम लोग इस पे काफी ध्यान देंगे. ठीक है, मैं इरेज करता हूँ. Right? And with axis perpendicular to VP.
and it is cut by, it's sectioned by a plane parallel to VP. There is one imaginary plane. Let's say this is an imaginary plane which is cutting this object into two parts. So when it is cut, इसमें it भी is this आया vertical plane. right? So what we will do now in this case, when it is resting on its rectangular face, so front view will give you true shape. So in front view, we will draw a square. This is XY line, and in top view, we will draw like this. Now they have said this cut, this is how much? 60, and this is 45. So what I will do, I will draw the cutting plane line. Cutting plane line is like an axis line, and we cut this way. It's not given, so we'll take 30. And what will happen? This will be hatched. Finish. So this is sectional front view, and this is top view. This is your sum number 2. He's going to ask you from this 5 sums only. So don't worry. Try and do this 5 sums only. ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? All of you understood? तो इसमें Yes, sir. Yes, हाँ, sir. इसमें ऐसा बीच में से ऐसा कटिंग प्लेन दिखा दो और ये ऐसा कर दो, खत्म. अभी इसमें ज्यादा ये पोर्शन में नहीं है 12th के, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, मतलब ये जितने सम से उतने ही करो, बहुत हो गया. ये तो बहुत वास्ट टॉपिक है. This 4 points, and the middle line we need to draw axis line, right? The height. ये hexagonal pyramid बोला है, and 2 sides are parallel to VP, so we know how to draw. इसका जो मेन बीच का पॉइंट है उसका एक्सिस वी विल ड्रॉ, ऐसा एक्सिस बना देंगे, बराबर, एंड देन वी विल ड्रॉ ट्रायंगल शेप में, ये देखो, and then we'll join this. This is how you will get hexagonal pyramid. Now what they are saying, again it is draw the cutting plane line on it. How to draw? They've said it is section by vertical plane. अगेन देखो उन्होंने बोला है सेक्शन बाय वर्टिकल प्लेन and parallel to VP and 10 mm from the axis. 10 mm फ्रॉम द एक्सिस. एक्सिस मतलब ये पॉइंट से 10 नीचे जाके आपको लाइन बनानी. Okay, here they have given some distance. So 10 mm from the axis. So from here we'll go down by 10 and we'll draw the cutting plane line. This is the cut. ऑल ऑफ यू गॉट दिस. ये मैंने लाइन क्यों बनाई और कैसे बनाई? उन्होंने बोला हुआ है कि एक्सिस लाइन से, एक्सिस से 10 mm इन फ्रंट है, मतलब एक्सिस से 10 mm नीचे आके मैं काट रहा हूँ. Plane line. Generally, when you draw this cutting plane line, then only this much portion is dark. The remaining portion will be dark. The cut portion won't be dark. So ये देखो ऐसे बनता है, तो इतना पोर्शन ही डार्क होता है, तो जो पोर्शन कट हो जाता है ना वो लाइट रहता है, जो रह जाता है वो डार्क होता है. अभी इसमें हमको 4 पॉइंट मिले, 1 2 3 4, तो वो 4 पॉइंट हमें फ्रंट व्यू में ड्रॉ करना है. this is how it will come. Now you see how many points you're getting. 1, 2, 3, 4 points. So what I will do, I will project all these points one by one. I'll project this point up. I'll get over here. I'll project this point. सी अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये पॉइंट्स मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो जहाँ पे कट होता है ना लाइन को वहां पे, और ये पॉइंट मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे. सो आपको बेसिकली ऐसा ट्रपीजियम शेप जैसा मिल जाएगा. ये समझा? दिस इज व्हाट योर सम इज ऑल अबाउट. बाद में मैं ये जितना भी बच गया है उन सबको मैं डार्क कर दूंगा. आया समझ में? अभी इतना समझ में आया ये कैसे बना? Yes, sir. और बाद में इसमें आप वो हैचिंग लाइंस दिखा दो. ये देखो ऐसे आएगा. ये हो गया सब. ठीक है, मैं वापस दिखा देता हूँ, आप देखो. Up, I'll get it on the base. Now this
when I write A, B, C, D, E, F, I'm writing only A dash, B dash, C dash, D dash. E and F are not required, but okay, I'll write that. So this line OB is getting cut over here. So that you extend straight up. So wherever it will cut on O dash, B dash. So that is your point PB dash. OC, wherever it is So could getting you cut, repeat the because it last is point that PC. you- Yes. You extend this up, wherever it will cut. That is your PC dash. So see, it's not done because I thought कि वो थोड़ा गिच-गिच हो जाएगा, so that's why I didn't do. But अभी मैं इस पे कर रहा हूँ. ये देखो, ये प्रोजेक्ट करोगे ना इधर आएगा. ये प्रोजेक्ट करोगे इधर आएगा. इसको सीधा लेके जाओ तो यहाँ पे आएगा. इसको सीधा लेके जाओ तो यहाँ पे आएगा. ठीक है? Now you see. And then you join. You join this to this, this to this, this to this, this to this. And the inside part will be hatched at 45 degrees. This is how it is. And the outer boundary will be dark like this. So draw this. It's very weird sound, but still. Got it? Understood? Fourth sum. A sphere of 50 mm diameter ये resting on आपको नहीं HP. है. ये शायद नहीं कराया. So if there is a sphere which is resting on horizontal plane, so it will be circle, circle in both front view as well as top view, right? And it is cut by a vertical plane. We don't know the distance. So I will just draw randomly one line wherever it is getting cut, right? These points I will project straight up. What I will do, I'll draw one horizontal line and vertical line, we and have I'll done it extend then. this line up. It's here. I'll extend this line up. It's here. So see, if it is a sphere and again that is cut by vertical plane, अगर उसको ऐसे काटा है, तो जहाँ पे काटा है, you draw plus over here and then you extend wherever it will cut. वहाँ पे you just draw circle. So front view में सिर्फ circle आएगा और उसको hatch करना है. ये बहुत simple है. Then I'll take this distance and I will draw one more circle. So this is the cut area. This I will hatch. So this is sectional front view and this is top view. Got it? Okay. It's like this. It's like we have sphere and this much portion is getting cut. How it will look? It will look like this. All of you understood this? Sphere वाला काफी simple है. दोनों में circle circle बनाना है. यहाँ पे line बनानी है. उसको ऊपर लेके जाना है और एक circle बनाना है. बस खत्म. Right? अभी और एक sum है. वो कर लेते हैं. Okay. Now, next part. Next is, okay. Next is cylinder. Now in this, again they have given, it is resting on diameter 50 and height 60, right? Is resting on horizontal plane with its curved, with its circular end parallel to VP. So it is like this. It is same like वो हम लोग ने जो अभी किया था ना square prism वाला sum, which is resting on its rectangular face. So इसमें भी they have said कि this cylinder is resting on its curved surface. मतलब ये अपने curved surface पे rest कर रहा है, तो वो भी ऐसा ही आएगा ना. और बाद में वो बोल रहे कि vertical plane से काट रहे हैं, तो अगर vertical plane से काटेंगे तो भी we will get a circle only ना. ऐसा कट करेंगे तो ऐसा ही मिलेगा. So that is what I'm explaining over here. देखो. This way. So when you draw in front view, you will draw a circle. In top view, you will draw a rectangle, right? And again, it is cut by what is written with a circular end parallel to VP, projects its top view and sectional front view exposed by a vertical section. So we need to visualize that, oh, this cutting plane is passing through this, any random midway or whatever distance you want to take. I'm taking midpoint. And what I need to do, I need to hatch this at 45 degrees. Done. So this is sectional front view and this is
top view. So we are done with section of. So इसमें देखो, इसमें क्या करना है? One second. So in this, what will be dark? This will be dark. ये जो part होगा, this part will be dark, right? And ये entire circle will be dark. आपका जो सर्कल रहेगा ना, वो डार्क रहेगा और वो हैच होगा, ठीक है? So this you should keep in mind when you are doing this sum. Any doubt in this? ये समझ में आया सब लोग को? अभी ग्रुप पे मुझे किसी ने और एक सम भेजा है, उसमें क्या ड्रॉ किया है, that I'll just show you. इसमें कोई डाउट नहीं है ना? All of you are okay with this, right? Yes, sir. Okay. Now group पे there is one more sum. I'll just draw that. मैं एक blank paper पे करता हूँ. ये stop share कर रहा हूँ. So I hope you people can see my whiteboard. इसमें उन्होंने पेंटागन दिया हुआ है. और ये ऐसा रेक्टेंगल आएगा, ऐसा दिया है. So all of you know how to draw this pentagonal prism, right? Now what they have given, he has given इसका midpoint. क्या मजा आता है मालूम नहीं. इसका midpoint पे the cutting plane is there. Okay, the cutting plane is passing through at 30 degree और वो यहाँ से ऐसे पास हो रही है. तो ये कट हुआ, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट. अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट को स्ट्रेट ले लेंगे. See, this is what I was light line से extend करता हूँ, so you people will know. So you need to extend this. You people need to extend this. So what you will get, that will be dark. ये देखो मैं बताता हूँ, ये डार्क हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा, and this will become dark. ये ऐसा हो जाएगा. आया समझ में इतना? और ये जो रेड लाइन है वो निकल जाएगा एंड आपको बीच में हैच करना है. Now we need to hatch. ठीक है, this is inclined at 45. So this is one sum which I got on the group. मतलब किसी ने मुझे भेजा. Sir, how did you make the pentagon prism? पेंटागन का कैसे बनाया बेटा? पेंटागन का तो वो मेथड है ना, you draw geometry, remember? Yeah, I know that, but like it is inclined to some angle, right? No. This line is perpendicular, beta. So this line is straight. Oh, right. Correct. हाँ, ये लाइन स्ट्रेट रख के ऐसे बनाओगे तो बन जाएगा. ऐसे बना. ठीक है? All of you got this? और कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछो. आपका जो पोर्शन है, पोर्शन मुझे किसी ने भेजा था. कहाँ गया? सर ग्रुप पे ही है. ग्रुप पे ही है ना? एक मिनट में मुझे मिल नहीं रहा अभी. इतना सारा आगे पीछे हो गया है.
खार वालों ने डाला है ना मेरे ख्याल से। हाँ मिल गया। सो सी यू हैव ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, बराबर, वो हम लोग ने किया था ना, ऑर्थोग्राफिक फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू वाला। बाद में यहाँ प्लेन्स वाला जो हम लोग ने लास्ट टाइम किया था। अभी जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, प्रिज्म, पिरामिड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, वो हम लोग ने किया। बाद में है सेक्शन ऑफ सॉलिड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। तो अपना पोर्शन तो हो चुका है, सिर्फ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, दैट यू पीपल नीड टू रिवाइज। ठीक So है, the orthographic projection and the planes one is the old ओल्ड syllabus, right? ओल्ड पोर्शन, हाँ पहले का है। मैं So थोड़े if मैं we practice the questions that you've given, is it हाँ fine? हाँ पहले के थोड़े क्वेश्चंस, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको थोड़े फोटोज भेज दूंगा ग्रुप पे, आप उतने प्रैक्टिस करो तो बहुत हो गया। मतलब मुझे लगता And है। so one more thing. हाँ बोलो। So if we do the questions that you have given, like the 3 videos, हाँ and the questions given by Ketan sir, is that enough? या इनफ इनफ। Because extra books से मैं और करूँगा तो दिमाग खराब हो। नहीं मत करो, बुक से मत करो, रेफरेंस के लिए देखना है तो देख लो कैसे बनाना है, क्या बनाना है, लेकिन मैंने वीडियो में सब बना दिया है बेटा। तो 1 2 जो Yes, sir. वीडियो है वो तो मैंने डाल दिया है, और अभी मैं और 2 वीडियो डाल दूंगा, आप लोग को भेज दूंगा, जो अभी मैं लास्ट में मैंने जो किया ना, डेवलपमेंट एंड सेक्शन ऑफ सॉलिड्स वाला, ये मैं आपको डाल के दे देता हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन सी, Yes. सो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू, बराबर। और कुछ रहेगा तो मुझे बोलो। प्लेन्स तो मैं आपको थोड़े सम्स देख के मैं डाल दूंगा, और ऑर्थोग्राफी भी मुझे जो ठीक लगता है उतना आप प्रैक्टिस कर लो। तो ये हो गया, बाद में आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी, उसके बाद अप्रैल से वी विल स्टार्ट सीरियसली वंस इन अ वीक, विल मीट ऑन जूम, और आई विल रिकॉर्ड इट एंड आई विल अपलोड इट, समथिंग लाइक दैट। कुछ करना पड़ेगा फॉर योर स्टडी वाइज के लिए, नो, नहीं तो ये नहीं होगा, क्योंकि 12th में पोर्शन बहुत बड़ा है, एंड आई डोंट सी हिम capable enough to handle so much of a crowd and to complete the portion, because उसके 7-8 स्टूडेंट्स में बैंड बज गई थी MKVVI में, उनका पोर्शन ही नहीं हुआ है 7 स्टूडेंट्स में। तो यहाँ तो 100 स्टूडेंट्स है टोटल, तो वो कैसे करेगा, मुझे वही परेशानी है। बट ठीक है, सो दैट्स व्हाट, so I want you people to help me in the sense, be regular। अप्रैल से हम लोग जो भी करेंगे मैं ग्रुप पे डालते जाऊंगा, अगर वो करते जाएंगे तो हो जाएगा अच्छा सा। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. ओके सर, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ, Thank you, sir. Bye, sir. प्लेन्स में पॉइंट्स Thank you, लाइंस sir. वो सब नहीं होगा, सिर्फ प्लेन्स ही होगा, ठीक है। Thank you, sir. Thank you, So, sir. this time this sir cut so many marks for not drawing proper arrows, and हाँ, because so- I'm used to drawing your method of arrows, yeah, and this time he cut what around 20 marks for just arrows, at least for mine.